Hello everyone. In previous class, we discussed about what is the push-pull amplifier. पिछले वाली क्लास में हमने push-pull amplifier और उसके types पढ़े थे और ये हमारा लास्ट टॉपिक था यूनिट नंबर 3 का। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 4। चलिए देखते हैं यूनिट 4 में क्या क्या स्टडी करना है। So in this lecture we will discuss about the syllabus of unit number 4. After this we will move on. The first topic of this unit is wave shaping circuit. पढ़ेंगे हम कि wave shaping circuit क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। After this we will move on the classification of wave shaping circuits like linear wave shaping and non-linear wave shaping circuits. The next topic is switching characteristics of the diode. तो इस लेक्चर में हम switching characteristics, जिसको हम dynamic characteristics of the diode भी बोलते हैं, वो भी स्टडी करेंगे, जिसमें कि पूरा का पूरा characteristics को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, एक टर्न ऑन, so the next topic is turn on time or turn on characteristics of the diode, and next topic is a turn off time, or it is also known as reverse recovery time characteristics of the diode, and finally the references of this presentation. So in this lecture we cover all these topics one by one. So let's start with topic 1, syllabus of unit 4. So in this unit we will study about what is the wave shaping circuits. In this we will learn about what is the switching characteristics of the diode and transistor, its turn on and turn off characteristics, as well as the turn on, turn off and reverse recovery time, transistor as a switch, multi-vibrators, its classification like bistable, monostable, astable multi-vibrators, clipper and clamper circuit, differential amplifier, calculation of differential common mode gain and CMRR using H parameters, means hybrid parameters, Darlington pair and bootstrapping techniques, cascade and cascade amplifier. तो यूनिट नंबर 4 में हमें ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने हैं। इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं वेव शेपिंग सर्किट क्या होता है, उसके टाइप्स और स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड, जिसमें हम टर्न ऑन, टर्न ऑफ एंड रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड का देखेंगे। The next topic is wave shaping circuits. A signal can also be called as a wave. Every wave has a certain shapes when it is represented in a graph. This shape can be of different types such as sinusoidal, square, triangular, etc., which vary with respect to the time period, or they may have some random shapes disregard of the time period. तो नॉर्मली हमारा वेव शेप होता क्या है, वेव का जो स्ट्रक्चर होता है या जो डिज़ाइन होता है, कोई भी सिग्नल होता है वो एक स्ट्रक्चर्ड या डिज़ाइन की फॉर्म में होता है, उससे ही हम उस सिग्नल का शेप बोलते हैं या वेव शेप हम उसको कहते हैं। जैसे कि साइनसॉइडल वेव फॉर्म में एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल होता है, तो वो साइन वेव का वेव शेप कहलाता है। और भी सारे टाइप के वेव शेप होते हैं, जैसे स्क्वायर हो गया, ट्रायंगुलर वेव हो गया, एक्सेट्रा।
Next is the type of wave shaping circuit. So there are two main types of wave shaping circuit. First one is called the linear wave shaping and second is called the non-linear wave shaping. The next topic is linear wave shaping circuits. Linear elements such as resistor, capacitor and inductors are employed to shape a signal in their linear wave shaping. A sine wave input has a sine wave output and hence the non-sinusoidal inputs are more prominently used to understand the linear wave shaping. तो लीनियर वेव शेपिंग सर्किट हम कैसे बनाते हैं, उसमें हम लीनियर एलिमेंट्स को कनेक्ट करते हैं लाइक रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो लीनियर एलिमेंट के थ्रू जो सर्किट डिजाइन होते हैं और जो हमें इनपुट और आउटपुट में साइनसोइडल वेवफॉर्म देते हैं उनको हम लीनियर वेव शेपिंग सर्किट बोलते हैं। फिल्टरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑटोनेटिंग द अनवांटेड सिग्नल और reproduced the selected portion of the frequencies component of the particular signal. फिल्टर का यूज हम क्यों करते हैं? फिल्टर्स का यूज हम करते हैं जो हमारे मेन सिग्नल में अनवांटेड सिग्नल आ गए हैं जो हमें नहीं चाहिए, उनको हटाने के लिए या उनको फिल्टर करने के लिए वी कैन यूज अ फिल्टर्स। सो इन अ फिल्टर्स, in the process of shaping a signal, if some portion of the signal are felt unwanted, they can be cut off using a filter circuits. तो फिल्टर का यूज एक्चुअली हम क्यों करते हैं? प्रॉपर वेव शेपिंग के लिए वी कैन रिक्वायर अ फिल्टर्स। अ फिल्टर क्या होता है? अ फिल्टर इज अ सर्किट दैट कैन रिमूव अनवांटेड पोर्शन ऑफ अ सिग्नल एट इट्स इनपुट। फिल्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि उसको जो इनपुट सिग्नल दिया जाता है उसमें से अनवांटेड सिग्नल को फिल्टर आउट कर देता है। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल इज ऑल्सो टर्म्ड एज ऑटोनेशन। We have few components which help us in filtering techniques. Number one, a capacitor has the property to allow AC and to block DC. Number two, an inductor has the property to allow DC but block AC. Using these property, these two components are specially used to block or allow AC or DC. The filters can be designed depending upon these properties. We have four main types of filter. Number one, low pass filter. Number two, high pass filter. Number three, band pass filter. And number four, band stop filter. So this is all about the linear wave shaping circuits. Now the next is non-linear wave shaping circuits. Along with resistor, the non-linear elements like the diode are used in non-linear wave shaping circuits to get a required altered output. तो नॉन लीनियर एलिमेंट्स का जब हम यूज करते हैं वेव शेपिंग सर्किट को डिजाइन करने के लिए तो उसको हम नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट बोलते हैं। नॉन लीनियर एलिमेंट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल डायोड। डायोड इज कॉल्ड अ नॉन लीनियर एलिमेंट। Either the shape of the wave is alternated or the DC level of the wave is altered in the non-linear wave shaping. The process of producing a non-sinusoidal output wave from sinusoidal input using non-linear element is called as non-linear wave shaping. तो non-linear wave shaping circuit क्या होता है?
जो कि हमें नॉन साइनसोइडल आउटपुट देता है जब हम उसको इनपुट में साइनसोइडल इनपुट देते हैं। तो ऐसे सर्किट को हम नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट बोलते हैं। और ऐसे सर्किट बनाने के लिए हमें नॉन लीनियर एलिमेंट्स की जरूरत होती है, फॉर एग्जांपल डायोड। Clipper circuits. A clipper circuit is a circuit that rejects the part of the input wave specified while allowing the remaining portion. The portion of the wave above or below the cutoff voltage determined in the clipped off or cut off. तो क्लिपर सर्किट का हम यूज क्यों करते हैं? क्लिपर सर्किट जो है वो वेव में से कुछ पार्ट को रिजेक्ट कर देता है और कुछ ही स्पेसिफाइड पार्ट्स को ही आउटपुट में जाने देता है जो कि हमें डिजायर्ड है। इसलिए हम क्लिपर सर्किट का यूज करते हैं फॉर नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट में। द क्लिपिंग सर्किट कंसिस्ट ऑफ लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स। दोनों हो सकते हैं क्लिपर सर्किट में, like resistor and diode, but not energy storage element like the capacitor. Okay, so clipper circuit जो होता है उसमें linear element से भी हम बना सकते हैं और non-linear element से भी हम clipper circuit को बना सकते हैं, but उसमें कोई भी energy storage element नहीं लेना है, for example capacitor. These clipping circuits have many applications as they are advantageous. Number one, the main advantage of clipping circuits is to eliminate the unwanted noise present in the amplitude. Number two, these can work as square wave converters as they can convert sine waves into square waves by clipping. Number three, the amplitude of the desired wave can be maintained at a constant level. So these are some advantages of clipping circuits. Among the diode clippers, the two main types are positive and negative clippers. Number next, switching characteristics of the diode. स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड भी बोलते हैं। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज द डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच शो द वेरिएशन ऑफ द डायोड करंट और वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। एक्चुअली डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये है वेरिएशंस ऑफ द वोल्टेज एंड करंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज और करंट है उसके वेरिएशन को हम टाइम के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करते हैं। इसी को हम स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स या डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड बोलते हैं। A power diode takes finite time to change its state from on state means conduction stage or off stage means blocking stage and vice versa. This time taken by the diode is an important parameter of a diode. The switching characteristics give the following information about the diode. Number one, show the time taken by the diode to change its state. मतलब डायोड को ऑन से ऑफ आने में कितना टाइम लगेगा या कितना टाइम लेगा वो शो करती है स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर टू, ऑल्सो shows the variation in magnitude of voltage current during the switching period. स्विचिंग पीरियड में हमारा वोल्टेज और करंट का कितना मैग्नीट्यूड है वो भी शो होता है स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में। The switching properties and value of a diode are given on the specification sheets of diode. Both the switching time of the diode and the waveforms of the voltage and current of the diode are affected by the intrinsic property of the diode and also by the circuit in which they are used. The switching characteristics of a power diode is different from a
सिग्नल लेवल डायोड। इट मीन्स सिग्नल लेवल डायोड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, वो अलग होती है पावर डायोड से। तो हमने क्या किया, पूरा का पूरा स्विचिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके हम आसानी से समझेंगे। सो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिवाइड इनटू 2 रीजन। फर्स्ट वन इज कॉल्ड टर्न ऑन रीजन और टर्न ऑन ट्रांजिएंट, एंड सेकंड इज कॉल्ड द टर्न ऑफ ट्रांजिएंट, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड। So this is the switching characteristics of the diode. This is the switching characteristics of the diode. So this is the current waveform and this is the voltage waveform. इसको हम डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड भी बोलते हैं। तो जो पहला वाला आप वेव शेप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द करंट वेवफॉर्म, एंड सेकंड इज कॉल्ड द वोल्टेज वेवफॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। दोनों की दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। एंड दिस पीरियड जो एरो से इंडिकेट किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड द टर्न ऑन टाइम और टर्न ऑन ट्रांसिएंट और टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड। एंड ये जो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क किया है, इसको हम बोलेंगे टर्न ऑफ ट्रांसिएंट और टर्न ऑफ टाइम और टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड। ठीक है, अभी अब इसको हम देखेंगे कि इसको कैसे ऑन और ऑफ पीरियड को हमें कैसे समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑन पीरियड को समझना। So the next topic is turn on characteristics of the diode. Turn on characteristics of the diode. It is the transient condition obtained when the diode enter the forward bias state from the reverse bias state. ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कब मिलेगी, जब डायोड हमारा स्टार्ट होगा या कंडक्शन करना ऑन करेगा। टर्न ऑन ट्रांजिएंट or turn on characteristics of the diode is marked in the above switches characteristics as well as so separately in the figure. So this one is called the turn on characteristics of the diode. This is called the current waveform and this one is called the voltage waveform. The diagram is turn on characteristics of the power diode. चलिए समझते हैं कैसे बनती है। टर्न ऑन ट्रांजिएंट spans over time period t1 and t2 and two processes occur during these periods. ये हमारे पास टाइम पीरियड t1 है और ये हमारे पास टाइम पीरियड t2 है। तो इसमें ड्यूरिंग t1 एक प्रोसेस होगी और ड्यूरिंग t2 एक प्रोसेस होगी। समझते हैं कौन सी प्रोसेस होगी। ड्यूरिंग t1 space charge stored in the depletion region due to the reverse biasing is removed because the diode is now forward biased. तो पहले वाले ड्यूरिंग t1 में ये प्रोसेस होगा। सेकेंड ड्यूरिंग t2 the forward biased diode cause the injection of excesses carriers into the draft region, actually double injection take place. During the reverse bias condition, the stored charge exists in the depletion region, hence the region acts like a capacitor. Hence, even if the diode is abruptly forward biased, the voltage across the diode increases smoothly because of the capacitance of the space charge region and the current start to increase. See the waveform. Normally जो हमारा है इस रीजन के बाद हमारा जो करंट है वो लीनियरली इंक्रीज होगा और पर्टिकुलर इस जगह पे आके अब ये यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू हमें मिल गई है करंट की।
Current also increases smoothly due to the inductance of the material, and similarly the voltage across the depletion region increase smoothly due to the capacitance of the depletion region. तो voltage क्यों बढ़ता है? Due to the capacitance of the depletion region, and current क्यों बढ़ रहा है? Due to the inductance of the material. There is no conductivity modulation until the depletion region decreases, so its normal open circuit value. Therefore, the resistance of the drift region is large till then. Vt is equal to V ohm, means VR, plus VL, or we can say that R into IF plus L di by dt. Normally जो हम इक्वेशन लिखते हैं, where Vt is equal to voltage across the diode, V ohm is equal to voltage due to the resistance R of the drift region, VL is called the voltage due to the inductance L of the material. So Vt becomes maximum when current increases to the maximum value IF at t is equal to T1. After the T1, the conductivity modulation start, hence the resistance of the drift region decrease, so V ohm is equal to R into IF also decrease, and VL is equal to 0 since IF attained a constant value IF. Therefore, V diode decrease from peak value to the steady state value V on, and at t is equal to T2, conductivity modulation is completed. So the forward turn on time, that is T on time हमारा क्या रहेगा? T1 plus T2. जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा है उसमें हमारा टर्न ऑन टाइम क्या रहेगा? T1 plus T2, क्योंकि दोनों पीरियड में ही हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो टर्न ऑन कंडीशन में रहेगा. So this is called the turn on time. Next is turn off characteristics of the diode. It is the transient condition obtained when the diode enters the reverse bias state from the forward bias state. जब forward bias से reverse bias में enter करता है diode, तब हमें ये characteristics मिलती है. It is exactly the reverse process of the turn on transistor. Turn off characteristics is also known as reverse recovery characteristics. इसमें हम देख पा रहे हैं this is called the reverse recovery characteristics of the diode. इसको थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं. Here mainly the excess charge stored due to the double injection in the drift regions are removed first, so the depletion region could be formed and the diode can be reverse biased, that is the off state. This is the important process of the turn off transistor, which is known as the reverse recovery. For reverse recovery characteristics, number 1, unlike a majority carrier device like a Schottky diode, forward current in a power diode, that is due to the flow of electron as well as holes. This current results in accumulation of electrons in the p region and the holes in the n region. The charge is called stored charge, which had been carrying forward current must be swept out from the junction region before the reverse non-conducting state can be established. When the forward voltage is applied to the power diode, a short turn-on time elapses before the charges, electrons and holes at the p-n junction reaches equilibrium to carry full forward current. This time is in terms of nanoseconds. Similarly, when the reverse voltage is applied to the turn off
of the power diode, a short time elapses before reaching full blocking mode. This time in terms of microsecond. So in diode, turn on characteristics does not play important role in the device selection process. This is the reverse recovery characteristics of the diode, or turn off characteristics of the diode. When the diode is conducting in forward conduction mode, to turn it off, reverse voltage is applied. As shown in the above figure, the diode current momentarily become negative before become zero. जीरो होने से पहले क्या होगा, हमारी जो करंट होगी वो मोमेंटली नेगेटिव पोर्शन में जाएगी, उसके बाद जीरो होगी. That is, when the reverse voltage is applied, the forward diode current IF decrease linearly due to the leakage inductance to zero. The diode continues to conduct in the reverse direction because of the presence of stored charge in the two layers. The reverse current flow for a time called as a reverse recovery time. रिवर्स करंट जितनी देर तक फ्लो होती है डायोड में, उसी टाइम को हम बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम, रिप्रेजेंट करते हैं TRR से. इट इज यूजुअली लेस देन 1 माइक्रोसेकेंड. The reverse recovery time TRR is defined as the time between the instant forward diode current IF becomes zero and the instant reverse recovery current IRRM decays to 25% of its peak reverse value. TRR consists of two segments, T2 and T3. TRR is equal to T2 plus T3, means reverse recovery time is equal to T2 plus T3. What is T2? T2 is time between zero crossing of forward current and peak reverse current IRRM. During this time, charge stored in the depletion layer is removed. T3, what is T3? T3 is equal to time between the instant IRRM to the instant where 0.25 IRRM is reached. During this time, charge from the two semiconductor layer is removed. ये आपको T2, T3 कहाँ देखना है, कैरेक्टरिस्टिक से देखना है. तो हमारा रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होता है, T2 प्लस T3. The reverse recovery charge QRR must be removed during TRR. As a thumb rule, the lower TRR, the faster the diode can be switched. The ratio of T2 by T3 is called the softness factor. When S factor is greater than 1, the diode has the large oscillatory over voltage. S factor is equal to 1, then the diode is called soft recovery diode. If S factor less than 1, then the diode is called the fast recovery diode. The recovery or reverse recovery time TRR and the peak inverse current IRRM depends on the forward current IF. High di by dt at turn off cause a reverse voltage VRRM, that is higher than the applied voltage VR. Next is peak reverse current IRM, stored charge QRR, S factor PIV, usually mentioned is in data sheet. Important diode parameters to select the power diode for a particular application. Based on a reverse recovery characteristics, the power diode are classified into three categories. First one is called the slow recovery diode, second is called fast recovery, and third is called the Schottky diode.
The slow recovery diode are usually used in 50 to 60 Hz power rectification application. Fast recovery type are used in feedback or freewheeling of converters and snubber circuits. Schottky diodes are used in high frequency converter as they provide very fast switching. Next topic is references. So these are the references of this presentation. And thank you for watching this video.